Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. अभी हम लोग बोला है ना कैसे बल्लेबाज है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार रहीम सिंगल के बहुत फेवरेट है नहीं बोला है की बात है वो और अनिसा भाई की फेवरेट है तो ये बोलो social cash portion right to bank account it is supply SMS auto service will pay Limra Hyderabad अपने cash के लिए अगर एक्सट्रीम साइड सी लेवल पर चले बिना गर्मी इवन दुबई को बगला बदल पहले का अपन कितना पैसा इससे ऊपर कितना पहले कैसा वो ये वो अब Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Welcome to Jukaku Champions Trophy 2025 for the unveiling of the wonderful trophy. Big hand first of all, gentlemen. The guest today we have the fantastic personality. The first man I'd like to invite Mr. Juma Bhatti from Dubai Police to please come forward. He is the sponsor of VMJD Madrasa and also Jukaku Real Street. So please come forward, sir. A big hand, gentlemen. Next, I'd like to invite the man behind this wonderful tournament, Sarfraz Jukaku, to please come forward. Well, I will say Jukaku brothers, Usman Jukaku, to please come forward. On the other one, yeah. The next, well, I see he's my favorite, the president of Bhatkal Community Jeddah, Kamar Sada Saab, to please come forward. Well, we have one of the sponsors here. The sponsor of this tournament, Shihab, owner of Investor and Investment of Social Cash, Investor Real Estate, to please come forward. जोरदार तालियां इनका और एक मैं इंशाल्लाह बाद में आपको अनवील करूंगा इनके बारे में भी एक जबरदस्त इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया आप लोगों को स्टार बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए और उसके साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं. The next, I would like to invite Sameer KM. Dr. Saab, to please come forward. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार होनी चाहिए. ये बात, क्योंकि एक तो मौसम सर्द भी है, तालियां बजाएंगे तो थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी. माशाल्लाह, that was wonderful. The next, I would like to invite Mr. Ayas, Limra Restaurant, Hyderabad. He is one of the sponsors, gentlemen. A big hand for this wonderful personality. Ajmal Bhai, the ground owner, to please come forward. कहाँ पर है? इनके लिए जोरदार तालियां. अगर couple of you हैं तो ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं because of the voice and all. But he is a gentleman. He is a fantastic. Yeah, love you. वो तो पता ही है इसलिए इतना फिट है.
Well, first of all, the most important thing, we'll start this trophy unveiling with the holy words of the Quran. To recite the holy words of the Quran, Suhaib Shah Mundri will come forward. Suhaib, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم MashaAllah, Jazakallahu khair. We all know that Jukaku Champions Trophy सेकेंड सीजन है. इससे पहले भी बहुत ही जबरदस्त हुआ था, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया था, इसीलिए they came forward for the edition 2. उम्मीद करता हूं कि this will continue. Why not? When you have such a wonderful sponsors and such a smart two brothers, यकीनन एक ट्रॉफी होती रहेगी इंशाल्लाह. जोरदार तालियां दो भाइयों के लिए और जोरदार तालियां हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनके लिए जोरदार तालियां. Well, ये होनी चाहिए because we all know that sports आज के ज़माने बहुत ही बेहतरीन है. स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है. अगर स्पोर्ट्स हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे किड्स अगर नहीं खेलेंगे, अगेन उनके हाथ में वो टैब रहेगा और वो मोबाइल रहेगा, which is not good for everyone. उनके लिए भी अच्छा नहीं है एंड हमारे लिए भी अच्छा नहीं है. तो स्पोर्ट्स के लिए जोरदार तालियां. Well, I forgot one name. In fact, यहाँ पर लिखा था लेकिन थोड़ा नीचे था, इसलिए थोड़ा मिस हो गया. I request Tiruchinapalli to please come forward, who is the Sports Secretary of Bhatkal Muslim Youth Federation. Tara bhai, to please come forward. क्यों Tara? Is he here? I think he is here. Whatever, I know. I don't know. Tara Tiruchinapalli. Let me tell you, all the guests over here. He's 46-year-old and still is so good. In a terrific form. When he started the career, I think बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो पैदा भी नहीं हुए, and he's playing in the same team and still performing. ये बड़ी बात है, अपने आप को फिट रखा है and इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां. Well, I request Mr. Kamar Sada to please say a few words on this occasion of this wonderful event. और आपको कैसा लगा यहाँ कर, please let us know, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, congratulations to Chukaku brothers, Mr. Sarfraz and his brother. ये मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि मुझे यहाँ आना हुआ और इस वक्त यहाँ पर इस अनवेलिंग में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला. मैं ढेर सारी दुआओं के साथ आपको आने वाले दिनों के लिए जो है मुबारकबाद देता हूँ और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर. मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स से मैं काफ़ी जुड़ा हूँ, काफ़ी इवेंट्स में, काफ़ी टूर्नामेंट्स में और कई फेडरेशंस के और हमारी भटकल की कई स्पोर्ट्स सेंटर से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ. बात ये बहुत आजकल लोग कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स बहुत हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इससे जो भाईचारगी और इससे जो मेल मिलाप और इससे जो है एक फ्रेंडली माहौल और लोगों का मिलना जुलना होता है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह. मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया. विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द टीम. थैंक यू वेरी मच. Jazakallahu khair. Now the next guest I would like to invite to say a few words. Well, it's a big name and he has brought ऐसा बहुत कुछ उन्होंने लेकर आया है. I think Shihab recently introduced Social Cash, where homegrown influencer marketing and application where anybody and everybody
can become an influencer even if you have 100 followers. पता है आपके पास अगर 100 followers भी है तो आप influence बन सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको million followers होने चाहिए, lakhs followers होने चाहिए. By using this application, ये जो application है Social Cash, you can start earning side income. ये होती है power social media की. उसके साथ well let you know कि ये application App Store पर है, Play Store पर है और Huawei Store पर है. Especially brought to you by Investor Investment. Siya Bhai के लिए जोरदार तालियां. I request Siya Bhai to please come forward and say a few words. Assalamu alaikum. I'm really happy to see, all of your communities coming together. It's more than sport. I feel it's the entire community coming together. And I feel, when you have such kind of event, you come play sport, you have the sportsmanship. And I'm sure somebody told me a lot of players came from your hometown for this tournament. So it's getting to know the community very well. The younger generation meets all of them. They get introduced because nowadays we live in a world where people don't go out. Everything is available on the apps. You can order food, petrol, anything is on the app. So people don't get to meet each other. But this great initiative, Sarfaraz and Usman, Sarfaraz is a very close friend of mine, and we both are in the same building itself. We are doing business together as well. More than that, when he came for this tournament, I was like, of course, I will partner with him in this event sponsorship. Mainly because it's a community event. More than sport, I like, communities coming together. Sure, in this, because of this event, many people who met more than a year ago, they met at this event. And this is what we want. It's all about meeting brothers, all of them together. And I think may Allah bless the event, more success and everyone. Also, I just want to say a few things about one of my colleague and my friend Kapil. You see, Kapil Tina Singh. It is not a brand. It is Kapil is being a part of this event, supporting Sarfaraz. And Kapil's mom is currently suffering from disease. She's having cancer. So I want you all to pray for her speedy recovery, inshallah. May God bless her and give her all health. Speaking about Social Cash, it's an influencer marketing app. Basically, everybody can download, everybody can use. You have 100 followers, you have 1,000 followers, you have million followers. Accordingly, based on your reach, you will get paid. Paid campaign, we have continuous campaign. We are exclusive influencer marketing platform for Safari Hypermarket, Lulu Hypermarket. There are more than 25 brands where you can do the task. Task is like they will ask you to go to Lulu, make a video about Lulu's offer, etc. And you post it on your social media, you get paid for it instantly. So that is Social Cash. It's a free app. It's a free app. Everybody can come, and the payment is based on your account's reach. So I will be always here in the next tournament also, Jukaku. Of course, with this success, I think instead of every year, he'll make 2 tournaments every year now. So we will be also partnering and we'll be also supporting. We love communities coming together, and I wish all the best to everyone. And our commentator is doing a fantastic job. His commentator is also really good. And I told him which is very professional, which keeps the spirit for every player. And I'm happy nobody is getting injured and everything is taken care. Let's Allah bless everyone. Thank you, everyone. Thank you for coming. Thank you, Jazakallah khair. What a wonderful man and what a wonderful words he said. God bless you. Zordar taaliyan Shiha Bhai ke liye. Now I request my class fellow Sameer KM to please come forward and say a few words. आप थोड़े चौंके होंगे मेरे क्लास फेलो. He is my class fellow. अस्सलाम वालेकुम. पहिला मी होतो सांगतो नव्हतो सांगता आपली अस्सल वर्षे करतली बहरहाल alhamdulillah, I'm very, very happy to be among all of you. It's a wonderful occasion, beautiful ambience, a very well played match, and like Shihab brother said, these are opportunities for us to get together, for us to spend some quality time for ourselves. Because see, in today's modern world, everybody is so busy, so stressed, so worked up.
And occasions like this allow us to relax, to meet people, to enjoy a few moments. And that has a phenomenal positive effect on our emotional health. That's the most important thing today. Because you see, the modern world has come up with a lot of benefits, and at the same time, it has come up with a lot of banes. So, in order to overcome that, occasionally it's a beautiful climate here, very rare for us to enjoy this kind of climate in UAE. But mashallah, these days the winters are becoming very, very pleasant, very, very nice. And I also would like to heartfully congratulate my very close friend, Brother Sarfaraz, and his brother for making this wonderful arrangement, give us an opportunity to get together. Also the sports of cricket, or any sports for that matter, you need to understand that you also have to focus on playing, on building your skills, because end of the day, any kind of sports, will allow you to lead a healthier life. And when we were very young, we were always being told in school and all that health is wealth. So once again, I don't want to take too much of your time. मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, तो मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि उनको भरपूर कामयाबी मिले। उनके हर दुआ भी करता हूँ कि उनके बिजनेस में और ऐसे सब इवेंट्स में उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाब करे, ताकि वो ऐसे इवेंट्स और बनाएं और हम सबको मिलने का, मुलाकात करने का, मौसम एंजॉय करने का, अच्छा क्रिकेट देखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam, jazakallahu khair. That is the man with a great brains, He has got a terrific brains. He's a fantastic personality, a very good friend of mine. Thank you very much, gentlemen. And now, I'd like to request one of our sponsors, Ayaz, to please come forward and say a few words. Limra Restaurants ke owner. You can go and enjoy the biryani from here. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Without taking more time, as everyone say, I am totally agree with it. This is not a cricket tournament. For me, this is a health tournament, because this is a fitness tournament. Okay, because of sports spirit, we have got the time, good time. Because of Mr. Sarfaraz and Usman hard work, this success of tournament, this is the success of fitness. Because sports is a kind of fitness. Okay, so I am sure after seeing this organization and the climate how it's going here, in future this is a not less, more to come, and we sure will see. And in future, in a year, not one time, and we want to see 2 World Cups every 6 months. Okay, inshallah. Thank you for your. Jazakallahu khair. इनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी और plenty of action yet to come of Jikaku's Champions Trophy. Inshallah, you will see more action. Now I request our Sports Secretary of Bhatkal Muslim Youth Federation, Tala, to please come forward and say a few words. मैं सबसे पहले जुकाको ब्रदर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं सब खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि इस टूर्नामेंट को डिसिप्लिन के साथ खेलें। इससे पहले यूएई में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे वो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट थे, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स सेंटर के दरमियान यहाँ पर टूर्नामेंट के मैचेस खेले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो थोड़े लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स सेंटर का खेल रहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं। एक चैलेंज है हम सब के लिए कि इस टूर्नामेंट को कैसे कामयाब तरीन इख्तिताम तक पहुँचाएँ। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि इस टूर्नामेंट को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खेलें, और आगे के लिए जो जुकागो ब्रदर्स जो अगले साल के लिए भी जो प्रोग्राम तो टूर्नामेंट के लिए आसानी हो। मैं और एक बार जुकागो ब्रदर्स को इस टूर्नामेंट की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप Thank you very much. Last but not the least, I'd like to invite the man who हमेशा हमको बर्दाश्त किया है, and always come out with a lot of support. Ajmal Bhai, the owner of this ground, to please come forward. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें to say a few words on behalf of this tournament. Assalamu alaikum all. This is the first time we are associated with the Jukaku Champions League.
when I got a call related to ground and Gary, I didn't expect this much of pleasure you brings in our cricket ground. Definitely, अभी अगर मेरा call list check करेगा तो सबसे ज़्यादा सरफराज का call आएगा for following up for many things, and he makes sure that you getting a budget facility in Devswar. There are some ups and downs. We'll definitely make sure that we'll give you a good support in the future as well, and definitely we'll be supporting another season as well. And hats off to his dedications and commitment towards the cricket league. And you should be thankful he doing a more tournament in the future to get it more covered and bird. All the best to all the team who are participating in the Champions League. Definitely you are the pillar of his support. Then without you people, he cannot be a tournament organizer. Being an organizer, I should say. And once again, a congratulations and thanks to all the guests over around here, and especially the family. Forget to mention that I haven't seen a much community development tournament earlier in the past. What happened here, and all the best to Kaku Brothers for the Champions League. Thank you. Thank you very much, Ajmal Bhai. Now we have a gentleman, the very hard, warm-hearted gentleman, and we all know that. We all say that we are from India, and we say our second home is UAE, and we have a personality from the UAE. A big hand and a big round of applause for the gentleman, Juma Bhatti Sahib, who's from the Dubai Police. I request to please come forward or be from here and say a few words. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो भाई लोग? सब मजे में? अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच करे हुए, और बहुत शुक्रगुजार हूँ सरफराज और उस्मान भाई के लिए, और मुबारकबाद देता हूँ उन दोनों के लिए। यानी हर कामयाब के पीछे एक मकसद होता है। जब भी बंदा सफल होता है उसकी कामयाब ज़रूरी होती है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला को पूछना है, बाद में कामयाबी हासिल होता है। और बहुत बहुत मुबारक सरफराज को और उस्मान भाई को। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हर कामयाबी लोगों को मिले ज़िंदगी में और बिजनेस में, और बच्चों के भी कामयाबी मिले इंशाल्लाह। थैंक यू। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। और ये हमारे जमात के स्पॉन्सर भी है, जो कि मदरसा होता है उनके स्पॉन्सर भी, तो उसके लिए भी जोरदार ताली इनको। और देखिए बी में लोकल वो हमारी भाषा बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे टूर्स कितने डेडिकेट है। सो थैंक यू वेरी मच सर। नाउ वी हैव द टाइम वेयर वी अनवेल द ट्रॉफी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड, और एवरीबॉडी प्लीज जॉइन। Thala to please come forward. Thala Fude. Not now. Usman. Oh, here we go. This is the Kaku Champions Trophy. The trophy I'm winning, my goodness. Wow. क्या नजारा है, क्या मौकी है, माशाल्लाह। Lovely, lovely. Everybody, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Mashallah, great, absolutely wonderful. Well, along with us, we'll have a close post-match presentation. We'll do it right here in front of our guest. The match played between YMSA versus Asadullah, but at the end, it was YMSA who won the match. So, well played YMSA, and a big hand for the YMSA, and a big hand for my friend Suhail Jan, who played in this match. उनके लिए जोरदार तालियां, सुहेल के लिए जोरदार तालियां। I request the captain of Asadullah to please come forward and say a few words. For Rasik, I think 230 would be too much for you, because you've got enough batting with you, but still I think the bowlers didn't bowl. Asjad, Safwan suddenly picked 4 wickets, but still, he gave away too many runs. Actually, first thing is that we lost the toss and they decided to bat, and even though the inning Imad what he played and along with the Yasin was a wonderful inning, because we didn't expect from this inning, because the bowling is not too much like supporting for us, and pitch is very flat and ball is coming too easily to the bat itself, and we lost easy 2 catches. Because of that they built a big score and it's very difficult to achieve.
Well, I know that I always keep saying catches win the matches in a drop, then we know what exactly happened today. But still, when YMSA came to ball, they bowled really well. They batted really well and they bowled really well also. But I think you need to do a lot of homework in the next matches where you play. Inshallah, we will do our best, but I totally giving a credit to the YMSA, how they bowl, how they field. Actually, the days belong to them itself. Because of that, they win the match. Inshallah, we'll come back in the next tournament and we'll bring our maximum. We'll put a lot of effort and we'll do a lot of practice and we'll inshallah strongly come back and we'll win the trophy. Inshallah, here also. Alhamdulillah, we win a lot of trophy in India, but here our aim is to win one Jukaku trophy itself. Inshallah. Thank you very much. That was the captain. Now the captain of YMSA, Jasim, to come forward. ये क्या हो रहा है? जासीम को निकाला, सामने आ गया मुक्सिद. Well, Muqsid, this side. I get the pehla. Let me talk to you first. Let me tell you, he is one of the sweetest person of YMSA, Zodar Tala इनके लिए, because he is the son-in-law of the sweetness. Well, Muqsid, what a inning from Imad and what a great game today for you all people. I think the confidence goes up unbeaten so far in this tournament. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Sarfaraz Jukaku and Usman Ghani, who has given us opportunity to play in such a beautiful ground and who has created this wonderful platform. And talking about Imad's inning, he has played his career's best inning, and what an inning he has played today. It was amazing to watch from the dugout. All shots he has selected, it was like combined inning. He has taken a pressure first, after that he has played a wonderful inning. And Yasin, I would like to mention Yasin also, he has played a wonderful inning. He has supported him very well, and we have to play well for next match. Well, thank you, Muqsid. Well, we have a cash prize for from Judges MJ to Imad Qasimji to please come forward. 200 dirhams for you. Big hand for this wonderful man. 128. I think you will take it from our guest. Guest के हाथों से देंगे. Sir, आप के हाथों से देंगे हमारे इमाद भाई को. He's a man who scored 100. Yasin to please come forward. Judges MJ जाना. Yasin आपके लिए 100 dirham. Yasin. कमर भाई. Yasin देख. Now we have the man of the match, a trophy and 100 dirhams brought to you by Jukaku, Real Freight. The man of the match will be given by Ali Bhai to please come forward to give the award. एक कट हो गया तो इनका नाम थोड़ा सा लेने में भूल गया. It happens sometime. बड़े-बड़े टूर्नामेंट छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. Ali Bhai is a fantastic supporter of this Jukaku. Ali Bhai के लिए जोरदार तालियां. Imad to please come forward. 128 runs. What inning you played? A beautiful trophy. Taking his 100 dirhams and a trophy from Ali Bhai, Muhammad Ali Bhai. Congratulations and thank you, Imad. The form you are looking for, at least you got this year. कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम अल्लाह का लाख शुक्र है. मैं आपस रिकवरी करके मैदान में उतर गया. इंजरी चल रही थी मेरी 1 साल से. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ. ऊपर वाले की मर्जी है, सब कुछ उसके वजह से होता है. Well, I know ऊपर वाले की मर्जी है, but you are timing the ball really good. How was the pitch going? Is it the ball coming very easily or coming a bit late? It's सपाट pitch. सपाट पटाखा pitch. Well, owners को thank you कहना चाहिए आपको. ऐसी pitch उन्होंने आपको दिया. You are back into form. Well, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. इमाद के लिए और इनाम है.
सुहेल जान की जानिब से, ये मुस्बा नहीं है, सुहेल जान है, वो आए अपने हाथों से दे, सुहेल अपने हाथों दे, वाह 200 dirhams इनके लिए जोरदार तालियां, तालियां रुकनी चाहिए, कम ऑन। अब्दुल सिद्दीका आगे आए और अपने हाथ से दे 100 dirhams, नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मुझे किसा गलता, आता मैं मुझे किसा गलता, सालिक तुमको अपने देंगे दूंगा, खलास तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कम ऑन। चौधरी लगला दे, इधर इधर इज़ान खतीब टू प्लीज कम फॉरवर्ड, इज़ान पिछले जो मैचेस लास्ट वीक के जो 4 महीने मैच थे वो भी इसी वक्त में दिया जाएगा और मैं हमारे फोटोग्राफर्स कहूँगा बिल्कुल तैयार रहें। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, जैसे कि हमारे दो भाई शिकागो हैं, खूबसूरत उसी तरह से ट्रॉफी है माशाल्लाह। 4 चांद लगाए हमारे गेस्ट ने। अल्फला वर्सेस अनफा के बीच जो मैच हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच मोहतसिम जक्की, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। लास्ट वीक मोहतसिम, ओ या इज कमिंग, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ इनको पाता हूँ, चाहे वो भटकल में हो, दुबई में, और कल एक दिन पहले इन रियाद Abdullah Modia to please come forward and give the award. Come here, Dwa. He's the man with the check and a beautiful trophy. तालियां भाई, come on. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रियाद में भी इन्होंने मैच दिया था, वहाँ पे तो रियाल की बरसात, यहाँ तो दरम मिल रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन हर तरफ पैसों की बारिश। Now, YMSA वर्सेस मदीना, सफवान शानो जो बने थे सबके जानो, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक वन ऑफ द मैच फ्रॉम सर, टू प्लीज कम फॉरवर्ड। ये आगे छोटे इनके दो जानो, जब भी यूजुअली जो बाप होता है ना, बाप के जो बेटियां फेवरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बेटे फेवरेट हैं इनके माशाल्लाह। 3 बेटे हैं, बेटों के चक्कर में एक एक बेटा आते गया माशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। असदुल्लाह वर्सेस सुपरस्टार अब्दुल मुकीद खूमी, सुपरस्टार, ओए द स्मार्ट फेलो, वन ऑफ माय फेवरेट, बड़े स्मार्ट बंदे हैं ये। मैन ऑफ द मैच शिया भाई, टू प्लीज कम फॉरवर्ड। सोशल कैश याद रखना, इन्फ्लुएंसर बनना है तो इनको आपको फॉलो करे, डाउनलोड करे, लाइक करे, शेयर करें। सर मुझे पता है भाई, सारी दुनिया एक तरफ, हमारे भांजे एक तरफ। He looks like his uncle माशाल्लाह, मामू जान की तरह लगते हैं, थोड़ा हाइट बड़ा है इनका माशाल्लाह। The man with the golden smile. Hanifabad, Hanif versus HW versus Royal. Muhammad Amin, the man, Royal के, I think he's not here. Who will come? Anyone from Royal to take his award? चलो आप ले लो, इनके लिए जोरदार तालियां। ये क्या कहूँ, ये सब कुछ ऑफ रॉयल चला क्या से, वाह। धर्म गिन पहला कवर, कैच ले लो पहले। Superstar versus Medina, the last match we played. First of all, the losing captain of Superstar to please come forward. Salam. आप एक इंतजार था, सलाम। टफ लक टुडे। बहुत सारे लोग आपके इस इंटरव्यू का वेट कर रहे थे और हम भी वेट कर रहे थे, आप मिलते नहीं है। वेल क्या कहेंगे, यू नो Zia took the game away from you the way he batted. आपने सोचा था कि इस तरह की बल्लेबाजी होगी? ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन हम कंग्रेचुलेशन कहते हैं सेमीफाइनल में मदीना
पहुंच चुकी है। और जहां तक जिया का, बहुत एक अच्छे बल्लेबाज है, सीनियर भी है और स्टिल एक सीनियर की तरह नहीं खेलते हैं, मतलब एक यंग युवा प्लेयर की तरह खेलते हैं। सो जो उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया है, आज वो एक अच्छा स्कोर बना के मदीना टीम पहुंची। क्या लगता है आपको, कहाँ पे ओवर करना है, अगला मैच भी आपको खेलना है और क्या तैयारी के साथ आएंगे और कहाँ गलती हुई? गलती हुई स्टार्ट में हमारे बॉलर उतने खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, शायद आज उनका दिन था, तो इंशाल्लाह और कभी मौका मिला तो और अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। DCS यू सिलेक्ट्स में खेल के आपको कैसा लगा और जुकागो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल के कैसा लगा? ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और जहाँ तक जुकाकू का ये है तो उन्होंने ग्राउंड भी एक अच्छा चुना है और जहाँ तक वो अपना एक अच्छा टूर्नामेंट जो रखा है वो तो वेरी बेस्ट कहना चाहिए मुझे, बेस्ट तो छोड़ो वेरी बेस्ट है। सो आई थैंक्स टू जुकाकू, सो व्हाट दे हैव गिवन मी चांस आवर टीम to participate in this tournament. So thanks, sir. Well, Salam, wonderful talking with you. Thank you very much and good luck in the future. Thank you. But that was Salam, the man with the golden heart. Come on, a big hand for him. Now the winning captain for Medina to please come forward. Well, Usam, big match. You all came back and you played absolutely wonderfully. You batted well, and Zia, we can say that, you know, जो पुरानी तो अभी जंग नहीं लगा, अभी चांद बाकी है. So कैसा लगा जिया के सामने बल्लेबाजी करते हुए, and he was hitting those big sixes? Alhamdulillah, ये मैच जीते. This is not about one player. Alhamdulillah, our team played very well, and especially Zia, he played a fantastic game. And in this country, he has a good record. That came back now. Alhamdulillah, we are very happy with him. And when I was playing with him, he was encouraging me. He boosted up. Alhamdulillah, because of him, even at my game. Well, you are playing here, you are playing in DCS USLX Arena in Jukabu Champions Trophy. How do you feel playing? Because I saw this ground really good. I really enjoyed the way the atmosphere created by Ajmal Bhai. It's really good. I'm enjoying it. आप लोगों ने enjoy किया यहाँ पर? Really, it was a very good tournament. Jukabu Real Estate organized very well. Especially last week, how they organized the matches was fantastic. Seriously, how they are in the heart of seriously. So thank you for talking to us and have a great future. Thank you. Well, thank you, Usam from Medina. Now I'd like to invite Imran Akeri to please come forward. Imran, well, good. मैं आपको बोलना पड़ता है वीडियो थोड़ा नीचे करें because you are such a wonderful and smart boy. आगे आए, trophy in and a check of 100 dirhams. 36 ball 90. That goes to one of my friend. He's junior to my. He's junior. शेर कभी बूढ़ा नहीं होता. Zia, 90 from 36 balls. A hero है UAE के. 5 6 12 4. 5 6s and 12 4. My goodness. क्या बात है. अरे यहाँ पर है दोस्त. अगर Zia, क्या बात है. Have you word with me? Zia, mashallah. Zia. यकीनन आप जिस अंदाज से आज बल्लेबाजी की है, ऐसा लग रहा है और 5 साल आप जरूर खेलेंगे. कैसी थी विकेट, कैसी थी? विकेट तो उतनी ही बैट थी, आवाज थी, लेकिन आज दिन था मेरा चल गया. तो दिन था नहीं, आई थिंक जो इनिंग आपने खेली है ये सालों की मेहनत है एंड वी ऑल नो दैट यू आर स्टार ऑफ द यूएई और आपने यहाँ पे कर दिखाया है और मैं समझता हूँ कि बैटिंग बड़ी आसानी से हो रही थी. युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस अंदाज से आप बल्लेबाजी करें, क्या करें युवा के ऐसे बल्लेबाज आप जैसा बने? कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत करना है और क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलना है. क्रिकेट में अगर आप बेसिक चीजें अगर करते जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आप अच्छा खेल सके. ये टफ पिच है, हम लोग बेसिक में मार खा रहे हैं. एक इनिंग या 2 इनिंग में हम लोग अपने आप को स्टार समझने लगते हैं. अक्सर मैं प्लेयरों को देखा हूँ एकदम आजकल क्रिकेट एकदम इजी हो गई है खेलना. पहले बहुत हार्ड थी लेकिन अभी इजी हो गई है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है यंगर्स को कि हमें भी उनको देख के हमें भी खेलने का और दिल करता है. Well, thank you for talking to us and have a wonderful time.
वेल जिया कह रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने आप को फिट रखें और धूम्रपान से दूर रहें। I request both the captain to please come forward for the toss. Anfa. SWA and Alpha will have the toss. Your brother umpires, please come forward. Well, it's the time for the toss now. We got the umpire, we got both the captains. Who will spin the coin? Usman will spin the coin. Head is a call. And it is tail. Well, Usman, you won the toss. क्या करना चाहेंगे आज यहाँ पे? And what is the score you're going to put in the board? Inshallah, like what we have seen 2 matches, like big score to be 200 plus. Inshallah, trying to make 200 plus. Inshallah, for this match. Any changes in the game, or you were playing the same score what you played yesterday? We have 2-3 changes today. We plan for differently by if we can win this match. Inshallah. Well, thank you for talking to us and hope we'll have a great match. Inshallah, inshallah. Well, Salam. Well, we love the toss, but I think what score exactly you want to stick the positions? अस्सलामुअलैकुम। हमारी ये उम्मीद रहेगी कि 150 के अंदर उनको रखने का है इंशाल्लाह। वो उम्मीद पे हम लोग बॉलिंग करेंगे। कोई चेंजेस आपकी टीम में और यू आर प्लेइंग विद द सेम स्क्वाड? आज हमारी टीम में 3 चेंजेस है। हमारी टीम में आज जो है तमान को मुंगुड़ा, नवाज को और साथ में ताइब को। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। होप यू हैव अ ग्रेट मैच। Motasim to please come for the toss. Motasim and Afzal SJ. Please आगे आए टॉस के लिए। एम्पायर कांटे का मुकाबला होगा अनफा वर्सेस रॉयल। बिग मैच। We have the umpire, we have both the captains. Who will spin the coin? Motasim will spin the coin. Heads to the call. And it is tail. Motasim. Okay, bhai. You won the toss, so what you'd like to do here tonight? We would like to bat first. And what is the score you want to put on the board? We would like to try inshallah 190 plus inshallah. Any change in the squad, or you're playing the same squad we played last match? We have 4 changes in place of Fuzail, Asrar, Samullah and Shezan. 4 players, Samran, Tausif Raja and Ahmadi. One more player. No worries. Thank you for talking to us and hopefully have a great match. Inshallah. Thank you so much. Afzal lost the toss. Again, what is the score you want to restrict the opposition? कितना चेस करना पसंद करेंगे? We want to restrict them around 150, 160. कोई changes or you're playing with the same squad? One change. Thank you for talking to us. आपका ज़्यादा time लगा, hope you'll have a great match. Well, that is the news that Anfa won the toss and elected to bat first. और मैं हमारे मेहमानों का शुक्र अदा करना जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए who took up the time. So that's all from the trophy unveiling. मैं समीर इंसानी अलविदा लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ with live commentary. Till then, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।